Hello students, I am Sanjit Kumar Giri. This is my YouTube channel. If you see the next videos, then please subscribe my channel. Today I have discussed about the second part of second unit, that is amplifier. First, today we have discussed about the transistor biasing. Transistor biasing is the proper flow of zero signal collector current and the maintenance of proper collector emitter voltage during the passage of signal. किछि परिमाणर सिग्नल जगु एथिरे जीरो सिग्नल कलेक्टर करेंट प्रॉपर्ली फ्लो करता है और जो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज टा प्रॉपर्ली मेंटेन होगी थाए. ए ट्रांजिस्टर बायसिंग करिवार बा ट्रांजिस्टर बायसिंग रो जो बेसिक पर्पस टा होचे केमिति ट्रांजिस्टर टा प्रॉपर्ली फंक्शनिंग करूछ, केमिति ट्रांजिस्टर प्रॉपर्ली काम करूछ. सो आमे कहि परिबा the basic purpose of transistor biasing is the proper functioning of the transistor. Then the next point is if the transistor biasing is properly functioning, जदि ट्रांजिस्टर प्रॉपर्ली फंक्शन करूचे ताले आमे कहि परिबा जो तारो एमिटर बेस जंक्शन टा प्रॉपर्ली फॉरवर्ड बायस्ड होबो आउ कलेक्टर बेस जंक्शन टा प्रॉपर्ली रिवर्स बायस्ड होबो जे कोनोसी सिग्नल पाई. ताले आमे कहि परिबा द थर्ड पॉइंट इज the position the transistor function properly if the emitter base junction is properly forward biased and the collector base junction is properly reverse biased during the all parts of the signal. The circuit that provide the transistor, जो सर्किट टा ट्रांजिस्टर टा को प्रोवाइड करे तार से सर्किट टा को हम कहि परिबा बायसिंग सर्किट. देन द नेक्स्ट वन इज द स्टेबिलाइजेशन. Stabilisation is the process of making the operating point independent of temperature changes or variations in the transistor parameters. Stabilisation टा होचे गोटे प्रोसेस जो प्रोसेस रे ऑपरेटिंग पॉइंट टा टेम्परेचर रो परिवर्तन ऊपर डिपेंड करे नाही बा ट्रांजिस्टर रो जो पैरामीटर्स माने जो रहिचंती जो वेरिएबल्स माने जो रहिचंती से वेरिएबल्स मानको ऊपर से डिपेंड करे नहीं. तो the stabilization of the operating point is required because of the following reason. ऑपरेटिंग पॉइंट टा को स्टेबलाइज्ड करबा निहाती दरकार एई तीनोटी कंडीशन पाई. प्रथमे टेम्परेचर वेरिएशन, जदि टेम्परेचर वेरी करूथबो ताले ऑपरेटिंग पॉइंट टा स्टेबलाइज होथबो, ऑपरेटिंग पॉइंट टा ता ऊपर डिपेंड करबो नाही. Then the next one is the variation in transistor parameters. Transistor parameters मानकर जेतेबे परिवर्तन हबो सेतेबेले भी मध्य ऑपरेटिंग पॉइंट टा स्टेबलाइज्ड हबा दरकार. Then the thermal runway, ताप द्वारा भी मध्य ऑपरेटिंग पॉइंट रो कोनोसी परिवर्तन हबो नाही. सो प्रथमे पढिबा फर्स्ट we have discussed about the temperature variation. ए जो टेम्परेचर वेरिएशन कथा जेतेबे कहबा the collector current for common emitter transistor circuit, ट्रांजिस्टर टा जेतेबेले कॉमन एमिटर भाबरे सर्किट रे कनेक्ट हे, ट्रांजिस्टर जेतेबेले सर्किट रे कनेक्ट हे थाए सेतेबेले तार जो कॉमन तो कॉन्फिगरेशन ता थाए कॉन्फिगरेशन टा कॉमन एमिटर कॉन्फिगरेशन हे थाए तबे सेतेबेले हम कहि परिबा कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर सर्किट से सर्किट टा सेतेबेले जो कलेक्टर करेंट आमे पाई थाओ से कलेक्टर करेंट टा आमे कहि परिबा IC इक्वल टू बीटा IB प्लस ICO. but ICO equal to
आमको जना अच्छी ICBO डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा जदि ICO इक्वल टू ICBO बाय 1 माइनस अल्फा हिथिबो तले IC इक्वल टू बीटा IB प्लस ICBO बाय 1 माइनस अल्फा बट आमको जना अच्छी 1 बाय 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 प्लस बीटा तले वैल्यूटा को जे जतले 1 बाय 1 माइनस अल्फा जगह पुट कर दबा तले हम पाई परिबा IC इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा इनटू ICBO ये जो ICBO टा कोन ना दिस इज द कलेक्टर लिंकेज करंट hence collector linkage current ICBO is affected by the transistor variation ट्रांजिस्टर जदि सॉरी टेम्परेचर वेरिएशन टेम्परेचर जदि वेरी करिवो तल तार प्रभावटा निश्चित भाव में कलेक्टर लिंकेज करेंट ऊपर पड़ो देन दी नेक्स्ट वन इज द वेरिएशन इन ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स जदि ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स वेरी करिवो तले हम देखिबा केमिति स्टेबलाइज्ड करि पारुछ ऑपरेटिंग पॉइंट if the transistor is replaced by another transistor of same type operating point is changed due to the variation in beta and VB जदि गोटे ट्रांजिस्टर टा रिप्लेस हवा आउ गोटे ट्रांजिस्टर जो ट्रांजिस्टर टा एक टाइप रो ताल तार ऑपरेटिंग पॉइंट टा भी मध्य चेंजेस हो जिवो ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ बीटा एंड VB बीटा इज द एप्लीकेशन करंट एप्लीकेशन फैक्टर फॉर कॉमन एमिटर मोड so VB is the base emitter voltage. It is necessary to stabilize the operating point to hold IC equal to constant in spite of variation in transistor parameters. जदि ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स मानकर परिवर्तन आमे करू तापरे भी निश्चित भाव रे इटा नेसेसरी हो जाउची ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज करिया पई सेटा सेतेबेले ही परिबो जेतेबेले IC टा आमे कांस्टेंट कर रखी. Then the next one is the thermal runway. What is the thermal runway? If the transistor to burn out, if the transistor to burn out, then the collector current is increases by very large amount. Then this is known as thermal runway. So we know that the collector current for common emitter transistor is IC equal to already I have discussed beta IB plus 1 plus beta into ICBO. जदि यही क्षेत्र में आम देखा जदि ICBO टा को आम बढ़ेबा तल निश्चित भाव में IC टा भी बढ़ी जीवो. If ICBO is increased then the collector current IC is increased by 1 plus beta into ICBO. And then the next point is the increase in IC will increase the temperature of the transistor which will also cause the increase in ICBO. So कुछ जदि आम ट्रांजिस्टर रो टेम्परेचर टा को आम बढ़ाइबु ताले निश्चित भाव में ICB मध्य बढ़िबो जहा द्वारा ऑटोमेटिकली ICBO मध्य बढ़िबो. एई कारण जगु ट्रांजिस्टर टा को ट्रांजिस्टर टू बर्न आउट जहा द्वारा कलेक्टर करंट इनक्रीज करता है बहुत अधिक परिमाण जहाँ को आम रनवे बोली कहते. देन दी नेक्स्ट वन इज द स्टेबिलिटी फैक्टर. क्या को आम कह स्टेबिलिटी फैक्टर जो ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबिलाइज्ड होची सेटा निश्चित भाव में जो फैक्टर आसूची से फैक्टर आम स्टेबिलिटी फैक्टर कह परिबा. से स्टेबिलिटी फैक्टर डेफिनेशन टा कौन रही. It is defined as the rate of change of collector current with respect to the collector base linkage current at constant beta and IB. जदि current amplification factor common emitter mode रे constant थिबो base current टा constant थिबो then collector base linkage current जोटा को ICBO आमे कहंती ता अनुसार जो हार रे कलेक्टर करंट चेंज हुए सेटा को हम कहंती स्टेबिलिटी फैक्टर. स्टेबिलिटी फैक्टर इज डिनोटेड बाय S ताको सिंबल तार सिंबल टा में S बोली लिख परछु. सो S इक्वल टू में लिख परिबा द रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट मींस D by
d of ICVO with respect to the IC. Then लिख परिबा DIC by DICVO. Here IC is the collector current and ICVO also collector base linkage current. Then the method of transistor biasing. How transistor is what are the types of transistor? What are the types of methods used for the transistor biasing? आम केतोटी मेथड यूज करो ट्रांजिस्टर बायसिंग करिया ट्रांजिस्टर. सो देयर आर 3 मेथड्स. तीनोटी मेथड रही गोटे फिक्स्ड बायस, गोटे कलेक्टर टू बेस बायस, गोटे वोल्टेज बायस. किंतु ये जो CCX कथा कहवा जो +3 सेकेंड ईयर जो सेकेंड यूनिट रे जो हमर सिलेबस रही यूनिवर्सिटी रा मात्र 2टा बायस रही गोटे फिक्स्ड बायस और गोटे वोल्टेज बायस. सो प्रथम आम पढ़ा फिक्स्ड बायस. ये जो फिक्स्ड बायस रो जो सर्किट डायग्राम टा ऑलरेडी आम देखीचु. सो आम कौन करवा ताले कहि परिबा दी सर्किट डायग्राम पर फिक्स्ड बायस मेथड इज आल्सो सन इन द फिक्स्ड फिगर. सो ये फिक्स्ड बायस मेथड टा कर ना इन फिक्स्ड बायस मेथड द फिक्स्ड बायस मेथड कथा कहबा ताले हाई रेजिस्टेंस जहाँ को आम सिंबल लिखि पारछु IRB is connected between base and the positive terminal of DC supply DC source of supply for NPN transistor in common emitter configuration. प्रथम आम जो सर्किट टा नबा से सर्किट रे आम जो ट्रांजिस्टर टा को कनेक्ट करेबा से ट्रांजिस्टर टा कौन टाइप रही एनपीएन टाइप रो ट्रांजिस्टर रही. से जो एनपीएन ट्रांजिस्टर टा को सर्किट रे आम कनेक्ट करेबा तार जो कॉन्फ़िगरेशन टा निश्चित भाव में कॉमन एमिटर हेथिबो. तबने एमिटर टा बोथ इनपुट पाई भी कनेक्ट हेथिबो ना आउटपुट पाई. सो दिस इज द इनपुट सिग्नल. सो बर्तमान आम कहि परिबा जे हाई रेजिस्टेंस जो हमर आरबी ये हाई रेजिस्टेंस आरबी टा को आम कनेक्ट करवा क्या भितर ना पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डीसी सोर्स सप्लाई फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड बेस. इटा आम बेस कहि परिबा. इटा होची डीसी सोर्स जहाँ को आम VCC कहि परिबा. ए डीसी सोर्स रो ई पार्ट होची पॉजिटिव टर्मिनल. से पॉजिटिव टर्मिनल आउ बेस साथी रे जो आम ता मझिरे आम कनेक्ट करवा आरबी आ सुपर से पड़ दी जो करेंट पास करिवो ताको आम कहि परिबा आईबी करेंट. सो द सिंगल सोर्स ऑफ वोल्टेज VCC makes the emitter base junction forward biased and the collector base junction reverse biased. In this figure ए फिगर कथा जदि चिंता करिबा ओनली आमे गोटिए सोर्स रखिछु वोल्टेज सोर्स जहाँ आम VCC कहि परिबा. से VCC द्वारा आमको जड़ा अछि जे जदि बैटरी रो पॉजिटिव साइड टा जदि P टाइप साथे कनेक्ट हबो ताले एटा फॉरवर्ड बायस्ड हबो आ N टाइप साथे कनेक्ट हले तब आम रिवर्स बायस्ड कहि परिबा. सो ए जो VCC जोगु दिस इज द एमिटर, दिस इज द बेस एंड दिस इज द कलेक्टर. एमिटर बेस जंक्शन आम फॉरवर्ड बायस्ड पाई पारुछु ए VCC जोगु से भली बेस और कलेक्टर जंक्शन आम रिवर्स बायस्ड पाई पारुछु. सो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जदि आम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कथा चिंता करिबा ताले आम निश्चित भाव में कहि परिबा दिस इज द सेकंड किरचॉफ्स लॉ. we know that the sum of total EMF is equal to the sum of product of current and resistance. So locate in this figure, this is the total voltage VCC, this is the resistance RB, current is IB. So এই ক্ষেত্রে আমি যে ভোল্টেজটা পাইবা তাকে আমি কই পারিবা IB into RB. সেইভাবে जो आमर इनपुट कथा जदि आम कहवा यहाँ हूँ एमिटर यहाँ हूँ बेस. सो बेट एमिटर भी बेस एमिटर भीतर जो वोल्टेजटा रही आम कहीपर बेस एमिटर वोल्टेज VBE.
ताले आम कहि परिबा VBE प्लस IB into RB इक्वल टू VCC ताले VCC इक्वल टू IB RB प्लस VBE where VB is the base emitter voltage सो एई क्षेत्र रो आम VBE रो वैल्यू एई क्षेत्र रो आम IB RB रो वैल्यू बाहर करि परिबा ताले लेफ्ट राइट हैंड साइड रे जो VBE अछि ताको लेफ्ट हैंड साइड को नै जिबा ताले पाइ जिबा VCC minus VBE इक्वल टू IB into RB so implies that RB equal to VCC minus VBE by IB equation number 1 जदि VCC टा very very greater than हेथिबो बेस एमिटर वोल्टेज तारो ताले हमें कहि परिबा VCC minus VBE टा approximately equal to VCC जदि VCC minus VBE टा approximately equal to VCC हबो ताले इक्वेशन 1 टा हमें लिखि परिबा RB equal to VCC by IB so it हमें IB base current पाई परिबा IB equal to VCC by RB the base current is fixed ए बेस करेंट केते बेले फिक्स हे परिबो ना जेते बेले VCC और RB रो वैल्यू टा फिक्स हो द बेस करेंट इज फिक्स्ड बाय VCC एंड RB एंड फॉर दिस कॉज इज कॉल्ड एटा को हमें कहि परिबा फिक्स्ड बायस मेथड ए क्षेत्र रे हमें ऑलरेडी जानि छु जे कलेक्टर करंट रो जो फार्मूला टा को हमें ऑलरेडी पूर्व पढि सारछु IC इक्वल टू बीटा इनटू IB प्लस 1 प्लस बीटा इनटू ICBO ICBO टा होसी कलेक्टर बेस लिंकेज करंट सो ए जो इक्वेशन टा एटा को हम इक्वेशन नंबर 3 दे परिबा बर्तन इक्वेशन नंबर 3 टा को हम डिफरेंशिएट करेबा विथ रेस्पेक्ट टू द कलेक्टर करंट IC तो दी साइड रे हम डेरिवेटिव करबा विथ रेस्पेक्ट टू IC ताले लेफ्ट हैंड साइड टा हिजबो डेरिवेटिव ऑफ IC विथ रेस्पेक्ट टू IC इज 1 सो लेफ्ट हैंड साइड टा जदी 1 हिजबो इक्वल टू राइट हैंड साइड टा बीटा तो एप्लीकेशन कर जब हम ट्रांजिस्टर कांस्टेंट C मोड रे कहि परिबा सेटा कांस्टेंट ताले कांस्टेंट बाहर रहइबो ताले डेरिवेटिव का रहबो डेरिवेटिव ऑफ IB विथ रेस्पेक्ट टू IC प्लस 1 प्लस बीटा मध्ये कांस्टेंट से बाहर रहइबो एटा हम पाइ परिबा डेरिवेटिव ऑफ ICBO बाय डेरिवेटिव ऑफ IC एटा को इक्वेशन नंबर 4 दबा किंतु पूर्वरु हम स्टेबिलिटी फैक्टर क्षेत्र रे हम ऑलरेडी पढि सारछु S इक्वल टू DIC बाय DICBO जदि DICBO by DIC अछि त एटा को हम 1 by S बोली मध्ये लिखि परिबो तले इक्वेशन 4 रे 1 by S रो वैल्यू पुट कर दे परिबो तले हम लिखि परिबो 1 इक्वल टू बीटा इनटू DIB by DIC प्लस 1 प्लस बीटा by S सो बर्तन हम कोन करबा जो राइट हैंड साइड जो फर्स्ट टर्म ता अछि ताको हम लेफ्ट हैंड साइड को नै जिबा तले हम पाइ परिबा 1 माइनस बीटा इनटू DIB by DIC इक्वल टू हम पाइ परिबा 1 प्लस बीटा by S सो इधर हमें इजीली S पाई परिबा S का लेफ्ट हैंड साइड को नै जिबा लेफ्ट हैंड साइड जोटा अछि एटा कोन कि राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दे परिबा तले हम पाई परिबा S इक्वल टू 1 प्लस बीटा बाय 1 माइनस बीटा इनटू DIB बाय DIC इक्वेशन नंबर 5 जदि हमें ट्रांजिस्टर बायसिंग रो जो फिक्स्ड बायस मेथड कथा जदि कहबा तले निश्चित भाव रे बेस करंट IB टा कलेक्टर करंट IC ऊपर डिपेंड करे नहीं ताले हम कहि परिबा इफ द फिक्स्ड बायस मेथड ऑफ बायसिंग इन द ट्रांजिस्टर द बेस करंट this symbol is wrong because base current is IB ताले हम कहि परिबा द बेस करंट IB is independent of the collector current IC जदि बेस करंट टा इंडिपेंडेंट होबो कलेक्टर करंट साथे ताले बेस करंट टा कांस्टेंट हे जिवो कलेक्टर करंट तुलना रे ताले डेरिवेटिव कले वैल्यू 0 पाइ परिबा ताले DIB by DIC इक्वल टू 0 ए वैल्यू को नेकी हम पुट कर दो इक्वेशन 5 रे सो इक्वेशन 5 बिकम्स हम पाइ परिबा S इक्वल टू लोअर पार्ट टा हे जिवो हमरो 1 हे जिवो कारण 1 माइनस 0 होची 1 सो हम S इक्वल टू पाइबा 1 प्लस बीटा So what are the advantages of fixed bias method? It is very simple. It is बहुत सरल because only one high resistance is necessary. कारण एक क्षेत्र रे हमें मात्र गोटिए high resistance यूज करछु. The calculation are very simple. एक क्षेत्र रे calculation टाइप मध्ये बहुत सहज due to the set the biasing condition. If we want to the set the biasing condition for the transistor, it will be easy calculation for this case. So the calculation are very simple to set the biasing condition. Then the next one is the disadvantages. What are the disadvantages in the fixed bias method? It provides poor stabilization. Stabilization क्षेत्र रे बहुत कम परिमाण रो जो ऑपरेटिंग पॉइंट रही सेटा स्टेबलाइजेशन टा बहुत कम ए क्षेत्र रे
इट हैज पोर थर्मल स्टेबिलिटी ताप क्षेत्र में यार स्टेबिलिटीटा बहुत कम ड्यू टू दी लार्ज स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत अधिक परिमाण स्टेबिलिटी फैक्टर होता हेतु आम थर्मल केस रे तार स्टेबिलिटीटा बहुत कम रही। थैंक यू।